दंडवत प्रणाम. मी आज पासून भगवद्गीतेचे पारायण करणार आहे. माझ्या गुरुने जसं शिकवलं त्याप्रमाणे मी करणार आहे भगवद्गीतेचं पारायण. ज्या नामे समूळ पृथ्वी तरली ते नाम वाचे बसो. ज्या रूपे सागरात्मजा समजली ते रूप ध्यानी ठसो. ज्या पादे फणिकालिया स्पर्शिला तो पाद भाळी ठसो. ज्या हस्ते गिरी गोवर्धन उचलिला तो हस्त माथा वसो. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. श्री दत्तात्रेय महाराज की जय. श्री चक्रपाणी महाराज की जय. श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. दंडवत प्रणाम. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद् भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः. मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं युडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुस्य किसानः काशीराजस्य वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गमः. युधामन्युष्य विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गमः. युधामन्युष्य विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान्. सौभद्रे द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्ये बोध द्विजोत्तमम्. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रविमिते. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपशंसमितिञ्जय. अश्वत्थामा विकर्णस्य समदस्तिस्तथैव च. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ्य त्यक्तजीविता. नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं तिद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. ऐनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह. सिंहनादं विनोदोच्च शङ्खं दद्म प्रतापवान्. ततः शङ्खस्य भर्यस्य पनवानकगोमुखः. ससेवाभ्यहनन्तस्य शब्दस्थो मूलभवत्. ततः श्वेते हयर्युक्ते महतिस्तैनन्दस्थितो. माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यशङ्खो प्रदधन्तु. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय. पौड्रं दद्म महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. नकुलस्य देवस्य सुघोषः मणिपुष्पको. काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्वकीचा पराजितः. द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते. सभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्. सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत. नभश्चं पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनादेन. अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरद्धम्य पाण्डव. ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. अर्जुनोवाच. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापतमेच्युतो. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्.
कैमर्यास योद्धव्यमस्मि रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेण एतेऽत्र समागतः धातृराष्ट्रातुर्बुद्धिर्युद्ध प्रिय चिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्चेतान् समान्वेता कुरुनिधि तत्र पश्चास्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पौत्रान् सखिस्तथा शुश्रान् सहदेवस्य सेनयोरुभयोरपि तान् समक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदनिदमब्रवीत् अर्जुनवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्णं योऽसं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रसते हक्ता तक्चैव परिदह्यते न च शक्नामवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्चामि हत्वान् स्वजनमहावे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवेत न यथा मर्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्ता धनानि च आचार्या पित्रा पौत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा यन्तान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजेशे हेत किं नु महि कृते निहत्ये धातृराष्ट्राणां का प्रीतिशा जनार्दन पापमिवाश्रेदस्मान् हत्वेतानातयायिनः तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं न कथं न ज्ञेस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यादिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणयसन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णा धर्माभिवत अधर्माभिवत कृष्णं प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरो नरका एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डदकक्रिया दोषरेते कुलग्नानां वर्णसाङ्करकारके उत साधन्ते दाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तेनुषुम् अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मां प्रतिकारशस्त्रं शस्त्रपाणय धातृराष्ट्रारणे हन्तुस्तन्मे क्षेमन्तरे भवत संजय उवाच एवमुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ विपाश्रित विसृजे संशरं चापं शोकसविग्रमानस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। श्रीगोपालकृष्ण महाराज की जय।